तो चलिए आज बात करते हैं एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट से निकले कुछ खास विचारों पर। ये किताब है जुनून और लगन की ताकत के बारे में। लेखक इसे ग्रिट कहती हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा मिशन है ये समझना कि ये ग्रिट आखिर है क्या चीज, क्यों ये इतनी जरूरी मानी जा रही है, मतलब शायद टैलेंट से भी ज्यादा। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और सबसे अहम, क्या इसे डेवलप कर सकते हैं, अपने अंदर बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल। और देखिए, सबसे दिलचस्प बात जो इन सोर्स में सामने आती है वो ये है कि कामयाबी सिर्फ हुनर या टैलेंट का खेल नहीं है। अच्छा। हाँ, असल में हम टैलेंट पर इतना ध्यान देते हैं कि शायद उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। और वो क्या है? कोशिश, मेहनत। तो फिर देर किस बात की, आइए पता लगाते हैं कि जो लोग कमाल कर दिखाते हैं उनमें ऐसी क्या खास बात होती है। ये ग्रिट आखिर है क्या? सिर्फ कड़ी मेहनत तो नहीं? नहीं, सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं। सोर्स के मुताबिक ये दो चीजों का मेल है, जुनून और दृढ़ता। जुनून और दृढ़ता? हाँ, मतलब अपने लक्ष्य के लिए लंबे समय तक टिके रहना और जोश बनाए रखना। ओके। इसके दो पहलू साफ दिखते हैं। एक तो वो मुश्किलों में हार ना मानने का जज्बा और खूब मेहनत, और दूसरा ये साफ पता होना कि आखिर आप चाहते क्या हैं। अच्छा, मतलब एक दिशा। बिल्कुल, एक तय दिशा का होना। तो ये सिर्फ लगे रहना नहीं है, बल्कि सही दिशा में लगे रहना है। और यहीं पर मुझे लगता है बात और भी दिलचस्प हो जाती है। लेखक कहती हैं कि हम लोग टैलेंट से, मतलब कुदरती हुनर से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। जैसे वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी या क्लासरूम के उदाहरण दिए, वहाँ सबसे होशियार या टैलेंटेड लोग ही हमेशा कामयाब नहीं होते। सही कहा। वेस्ट पॉइंट का उदाहरण तो कमाल का है। एडमिशन टेस्ट के स्कोर ये नहीं बता पाए कि कौन ट्रेनिंग पूरी कर पाएगा, लेकिन ग्रिट स्कोर ने बताया। जिन्होंने ज्यादा ग्रिट दिखाई वो टिके रहे, भले ही शुरू में उतने टैलेंटेड न लगे हों। वाह। हाँ, और इसी से जुड़ी सोर्स में एक थियरी है। बताइए। कि देखिए, टैलेंट से बस ये तय होता है कि आप कोई स्किल, कोई हुनर कितनी तेजी से सीखते हैं। ओके, स्पीड। हाँ, स्पीड। लेकिन जो कोशिश है, जो मेहनत है, उसका असर डबल होता है। डबल कैसे? ऐसे कि देखिए, मेहनत से पहले तो स्किल बनता है ना। हाँ। टैलेंट और मेहनत से स्किल बना। ठीक है। और फिर उसी मेहनत से आप उस स्किल को इस्तेमाल करके कुछ हासिल करते हैं, मतलब कामयाब होते हैं। अच्छा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं हुनर इज इक्वल टू टैलेंट इनटू मेहनत, और कामयाबी इज इक्वल टू हुनर इनटू मेहनत। तो मेहनत 2 बार आ गई ना। अरे वाह। यानी मेहनत 2 बार गिनी जाती है। ये तो पूरी सोच को पलट देता है कि भाई टैलेंट ही सब कुछ है। बिल्कुल। इसमें वो नेचुरलनेस बायस वाली बात भी फिट बैठती है ना। हाँ, समझाइए जरा। कि हम उन लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं जो पैदाइशी टैलेंटेड लगते हैं, बजाय उनके जिन्होंने रगड़ रगड़ कर कुछ सीखा हो। सही है। नीचे का भी जिक्र है सोर्स में। वो भी यही मानते थे कि महान लोग अक्सर कारीगर जैसे होते हैं, जिन्होंने मेहनत से महानता गढ़ी है, वो यूं ही पैदा नहीं हुए थे। तो फिर वो बड़ा सवाल, क्या ग्रिट को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, यही सबसे जरूरी सवाल है। क्या ये कोई ऐसी चीज है जो हमें बस मिल जाती है, या हम इसे बना सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि हाँ, इसे विकसित किया जा सकता है। सोर्स यही कहते हैं। सच में? हाँ, देखिए, ये जीन्स और माहौल दोनों से असर पड़ता है इस पर यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। इसे बढ़ाया जा सकता है। कैसे? इसके लिए 4 जरूरी मनोवैज्ञानिक चीजें हैं जिन्हें हमें अंदर से बाहर की ओर, मतलब अपने अंदर विकसित करना होता है। अच्छा, वो 4 चीजें क्या है, बताइए। पहली है दिलचस्पी, इंटरेस्ट। जुनून या पैशन जो है ना, वो एकदम से नहीं मिलता। उसे खोजना पड़ता है, धीरे धीरे गहरा करना पड़ता है। और दूसरी है अभ्यास, प्रैक्टिस। लेकिन सिर्फ घंटों लगे रहना काफी नहीं है। तो फिर ये जानबूझकर किया गया अभ्यास होना चाहिए, डेलिब्रेट प्रैक्टिस। डिलिब्रेट प्रैक्टिस, ये क्या होता है? इसका मतलब है खास लक्ष्य तय करना, पूरा ध्यान लगाना, कहाँ कमी है ये समझना, फीडबैक लेना, और फिर उसे सुधारने के लिए बार बार कोशिश करना। सुनने में तो काफी मेहनत का काम लगता है तो ये मुश्किल हो सकता है, पर सोर्स कहते हैं कि जब सुधार दिखता है ना, तो इसमें मजा भी आता है। ये बात तो है। अच्छा, तीसरा है मकसद, पर्पस। ये यकीन कि आपका काम मायने रखता है, कि वो आपसे बड़ी किसी चीज से जुड़ा है, अक्सर दूसरों की भलाई से। अच्छा। जिन लोगों में ग्रिट होती है ना, उनमें अक्सर एक मजबूत मकसद की भावना पाई जाती है। दिलचस्प। और चौथी है उम्मीद, होप। ये सिर्फ मतलब विशफुल थिंकिंग नहीं है, तो क्या है? ये एक ग्रोथ माइंडसेट है। ये मानना कि कोशिश से हालात बेहतर हो सकते हैं
और हार या नाकामी को उसको परमानेंट या सब जगह फैला हुआ नहीं मानना, उसे टेम्परेरी मानना, किसी खास वजह से हुआ मानना। ग्रोथ माइंडसेट, हाँ ये सुना है। तो ये तो हुई अंदर की बातें, दिलचस्पी, अभ्यास, मकसद, उम्मीद। हाँ, अंदर से बाहर। लेकिन क्या बाहर की चीजें भी ग्रिट बढ़ाने में मदद करती हैं? जैसे हमारा माहौल? बिल्कुल, बहुत अहम रोल है माहौल का। जैसे पेरेंटिंग का तरीका। पेरेंटिंग कैसे? जो तरीका सपोर्टिव भी हो और साथ में बच्चों से उम्मीदें भी रखे, चैलेंज भी दे। किताब इसे वाइज पेरेंटिंग या समझदार पेरेंटिंग कहती है, मतलब प्यार और अनुशासन का सही संतुलन। अच्छा, और स्कूल कॉलेज के बाद की एक्टिविटीज का क्या, जैसे स्पोर्ट्स या म्यूजिक? उनका भी बड़ा रोल है, खासकर तब जब कोई किसी चीज में लंबे समय तक टिका रहे, सिर्फ कुछ हफ्तों के लिए नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी। हाँ बिल्कुल, एक दो एक्टिविटीज में लगातार लगे रहने से वो टिके रहने की, वो दृढ़ता की आदत पड़ती है। सोर्स में एक हार्ड थिंग रूल का भी जिक्र है। हार्ड थिंग रूल, ये क्या है? मतलब परिवार में हर कोई, बच्चे और बड़े भी, कोई मुश्किल काम चुने और उसे कम से कम एक तय समय तक करें, छोड़े नहीं। अरे वाह, ये तो बढ़िया नियम है। हाँ। और संस्कृति या माहौल का असर, जैसे किसी कंपनी का कल्चर? वो भी बहुत मायने रखता है। किसी ग्रुप या कंपनी का कल्चर हमारी पहचान और बर्ताव को बदल सकता है। जैसे फिनलैंड के लोगों में सिसु का कॉन्सेप्ट है। सिसु? हाँ, मतलब मुश्किल हालात में गजब की हिम्मत दिखाना, हार न मानना। कुछ टीमें या कंपनियां ऐसा माहौल बनाती हैं जहां टिके रहना, ग्रिट दिखाना एक तरह से नॉर्मल बन जाता है। तो कुल मिला के अगर हम सार निकालें तो इन सोर्स से यही निचोड़ निकलता है कि कामयाबी के लिए जुनून और लंबे समय तक टिके रहने की हिम्मत, यानी ग्रिट, हाँ ग्रिट, वो बेहद जरूरी है, शायद पैदाइशी टैलेंट से भी ज्यादा। बिल्कुल सही। और सबसे अच्छी बात यह है, जैसा हमने कहा, कि ये ऐसी चीज है जिसे हम सब अपने अंदर जगा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। कैसे? एक बात फिर से दोहराएं। अपनी दिलचस्पी ढूंढकर और उसे गहरा करके, सही तरीके से, मतलब जानबूझकर अभ्यास करके, अपने काम को एक बड़े मकसद से जोड़कर और उम्मीद का दामन थामकर। और साथ ही ये याद रखना भी जरूरी है कि ये सिर्फ हमारी अंदरूनी लड़ाई नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा माहौल, हमारे अपने लोग, हमारी एक्टिविटीज, जिन ग्रुप्स का हम हिस्सा है, ये सब ग्रिट को बनाने या बिगाड़ने में बड़ा रोल निभाते हैं। एकदम सही कहा। और यहाँ एक बात शायद सोचने वाली है सबके लिए। क्या? कि कोई भी व्यक्ति जो किसी मुश्किल काम में लगा है, चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो, कोई हॉबी हो, क्या वो जानबूझकर अभ्यास के तरीके अपना रहा है? क्या उसे फीडबैक मिल रहा है? क्या उसने अपनी कोशिशों को किसी बड़े मकसद से जोड़ा है? या फिर वो जिस माहौल में है, क्या वो माहौल उसकी लगन को, उसकी ग्रिट को सपोर्ट कर रहा है या उसे कम कर रहा है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हाँ, इस पे गौर करना फायदेमंद हो सकता है। अच्छा, तो आज हम एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट पर बात कर रहे हैं। जी। ये किताब ना इस आम ख्याल को चैलेंज करती है कि कामयाबी बस टैलेंट से मिल जाती है। बिल्कुल। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किसी लंबे मकसद के पीछे मुस्तकिल लगे रहना, यानी इस्तिकामत, और वो जो अंदर का जज्बा होता है, वो क्यों इतना जरूरी है, खास तौर पर जब सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। बिल्कुल, आज हम ग्रिट को समझेंगे। यानी ये सिर्फ काबिलियत नहीं है, बल्कि आपके जो लंबे अरसे के अहदाफ है ना, उनके लिए आपका जज्बा और आपकी साबित कदमी। ये अक्सर जहानत या टैलेंट से भी, आप देखेंगी, ज्यादा अहम साबित होती है। और यहीं से बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। जैसे वो वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी की मिसाल है। जी। वहां दाखिले के इतने सख्त मयार हैं, SAT स्कोर्स, फिटनेस टेस्ट, सब कुछ। लेकिन ये चीजें ये नहीं बता पाती थीं कि कौन सा कैडेट ट्रेनिंग पूरी करेगा और कौन छोड़ देगा। सही। मगर एक सादा सा ग्रिट स्केल था, एक सवालनामा, वो काफी हद तक कामयाब रहा ये बताने में। तो हैरानी की बात है ना कि कामयाबी का असल राज शायद कहीं और छुपा है। बिल्कुल हैरान कुन बात है। तो फिर ये ग्रिट है क्या चीज? हाँ, तो डकवर्थ कहती हैं कि ये दो चीजों का मजमुआ है। एक है पैशन, यानी किसी चीज के लिए गहरा देरपा जज्बा, और दूसरा है परसिवरेंस, यानी इस्तिकामत, वो हार ना मानने वाली जिद। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं, बल्कि मैराथन है, लंबी दौड़। जी, मैराथन। और ये जज्बा जो है ना, ये कोई वक्ती दिलचस्पी नहीं होती। मतलब यह है कि आप अपने काम में कोई गहरा मतलब, कोई मकसद तलाश करें। अच्छा। और इस्तिकामत का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप मेहनत कर रहे हैं, बल्कि ये कि जब मुश्किल आए, नाकामी हो, बोरियत हो, तब भी आप डटे रहें। रोज सुबह उठकर फिर से कोशिश करना, चाहे पिछला दिन कितना ही बुरा गुजरा हो। यही असल चीज है। ये बात तो है, लेकिन हम अक्सर उन लोगों से बहुत जल्दी मुतासिर हो जाते हैं जिनमें लगता है कि कुदरती टैलेंट है। हाँ,
ये नेचुरलनेस बायस कहलाता है। अच्छा। जी, एक तहकीक भी है इस पर, चिया की। हाँ। उसमें यही बात सामने आई कि लोग अक्सर उस शख्स को ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें कुदरती सलाहियत नजर आए, बजाय इसकी जो सख्त मेहनत से वहां पहुंचा हो। हालांकि मेहनती शायद ज्यादा कामयाब हो। बिल्कुल, चाहे मेहनती ज्यादा कामयाब हो, मगर हमें वो आसानी से मिली हुई कामयाबी ज्यादा अच्छी लगती है, लाशौरी तौर पर। मगर यहाँ पर नीत्शे जैसे मुफक्करों की बात याद आती है। वो कहते थे कि जिसे हम जीनियस समझते हैं ना, वो अक्सर सालों की छुपी हुई सख्त मेहनत का नतीजा होता है। अच्छा, मतलब वो नजर नहीं आती। वो नजर नहीं आती। वो लोग जो वाकई कुछ बड़ा करते हैं, वो बस अपनी सलाहियत पर बैठ नहीं जाते। वो तो मुसलसल बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं, अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हैं, और ये आसान नहीं होता। तो डकवर्थ ने खुद अपने पढ़ाने के तजुर्बे में भी यही देखा जी, कि क्लास के सबसे ज़हीन, सबसे टैलेंटेड बच्चे जरूरी नहीं कि आखिर में सबसे आगे हों। कई बार वो तालिब इल्म जिन्हें शुरू में मुश्किल होती थी, मगर वो लगे रहते थे, कोशिश करते रहते थे, वो उन ज़हीन बच्चों से भी आगे निकल गए। जैसे वो डेविड की कहानी बताती हैं। हाँ, डेविड की। शुरू में ग्रेड्स अच्छे नहीं थे, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी, इजाफी मेहनत की और आखिर में कमाल कर दिया। तो इसकी कामयाबी का राज क्या था? इसकी ग्रिट। बिल्कुल। असल बात ट्रेडमिल पर सिर्फ दौड़ना नहीं, असल बात यह है कि जब आप गिरें या थक कर रुक जाएं, तो अगले दिन वापस आकर फिर से दौड़ना शुरू करें। क्योंकि जब आप किसी चीज को मुस्तकिल तौर पर छोड़ देते हैं, तो सारी पिछली मेहनत जाया हो जाती है ना। सही बात है। बेहतरी का सफर वहीं रुक जाता है। तो ग्रिट का मतलब है धचके सहकर भी मैदान में डटे रहना। तो फिर सवाल यह है कि क्या ये ग्रिट कोई ऐसी चीज है जिसे हम खुद में पैदा कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं, या ये बस कुछ लोगों में होती है, कुछ में नहीं? ये बहुत अहम सवाल है, और अच्छी खबर ये है कि तहकीक बताती है कि ग्रिट को बढ़ाया जा सकता है। अच्छा जी, ये कोई ऐसी पक्की चीज नहीं है जो बस पैदाइश के साथ मिल गई। जैसे वक्त के साथ इंसानों का औसत कद बढ़ा है, वैसे ही हम अपनी ये नफ्सियाती सलाहियतें भी बेहतर बना सकते हैं। जबरदस्त। तो कैसे? डिकवर्थ इसके 4 अहम स्तुतून बताती हैं। पहला है दिलचस्पी, यानी इंटरेस्ट। दिलचस्पी। हाँ, और अहम बात यह है कि दिलचस्पी ना खुद ब खुद अंदर से नहीं आती, उसे बाहर की दुनिया से चीजों को आजमा कर दरियाफ्त करना पड़ता है, और इसमें वक्त लगता है। ठीक। तो पहला कदम हुआ दिलचस्पी को ढूंढना और इसे बढ़ाना। दूसरा क्या है? दूसरा है मश्क, प्रैक्टिस। मगर ये आम मश्क नहीं। अच्छा, इसे वो डिलिब्रेट प्रैक्टिस कहती हैं, जानबूझकर की जाने वाली मश्क। मतलब सिर्फ घंटों काम करना नहीं, बल्कि बहुत वाज़े छोटे छोटे अहदाफ बनाना, पूरी तवज्जो से काम करना, फिर देखना कि कहाँ कमी रह गई, यानी फीडबैक लेना, और फिर उस फीडबैक की बुनियाद पर बेहतरी लाने के लिए बार बार कोशिश करना। ये तो मुश्किल लगता है। बिल्कुल, और ये डिलिब्रेट प्रैक्टिस हमेशा मज़े की नहीं होती। अक्सर ये मुश्किल होती है, थका देने वाली होती है, आपको अपनी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। ये वो जगह है जहाँ सिर्फ दिलचस्पी काफ़ी नहीं रहती, यहाँ इस्तिकामत यानी परसिवियरेंस की ज़रूरत पड़ती है। सही। तो दिलचस्पी और फिर जानबूझकर मश्क। तीसरा क्या है? तीसरा सुतून है मकसद, पर्पस। ये एहसास कि आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए अहम नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी उसकी कोई अहमियत है। अच्छा, जैसे वो 3 ईंटें लगाने वाले मजदूरों की कहानी है। एक से पूछा तो उसने कहा मैं नौकरी कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। दूसरे ने कहा ये मेरा करियर है, मैं मिस्त्री बन रहा हूँ। मगर तीसरे ने कहा मैं एक अजीम काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के लिए घर बना रहा हूँ। ये मकसद का एहसास है जो आपको मुश्किल वक्त में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। वाह, दिलचस्पी, मश्क, मकसद। और चौथा सुतून? चौथा सुतून है उम्मीद, होप। उम्मीद? जी, मगर ये सिर्फ खुशफहमी नहीं है, ये वो गहरा यकीन है कि आप अपने अमल से अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। यानी ग्रोथ माइंडसेट वाली बात? बिल्कुल, ये मानना कि आपकी सलाहियतें पत्थर पर लकीर नहीं, मेहनत से बेहतर हो सकती हैं। और इसी से जुड़ी एक और चीज है लर्न्ड ऑप्टिमिज्म। वो क्या है?
यानी जब नाकामी हो तो उसे अपनी शख्सियत का मुस्तकिल हिस्सा ना समझना, बल्कि उसे आर्जी समझना कि ये वक्त गुजर जाएगा, और मखसूस समझना कि ये सिर्फ इस एक मामले में हुआ। ये उम्मीद ही आपको गिरने के बाद दोबारा उठने की ताकत देती है। जबरदस्त। तो ये चारों चीजें मिलकर ग्रिट बनाती हैं: दिलचस्पी, मश्क, मकसद और उम्मीद। जी। और यकीनन हमारा माहौल, हमारे आसपास के लोग, वो भी तो असरअंदाज होते होंगे। बहुत ज्यादा। जैसे वालिदैन जो बच्चों की हौसला अफजाई भी करें और उनसे मेहनत और जिम्मेदारी का मुतालबा भी करें। वाइज पेरेंटिंग। सिर्फ प्यार नहीं, चैलेंज भी। इसी तरह स्कूल की सरगर्मियां जिनमें लंबे अरसे तक मेहनत करनी पड़े, डकवर्थ उसे हार्ड थिंग रूल कहती हैं। अच्छा। या फिर एक मजबूत टीम का माहौल, जैसे अच्छी स्पोर्ट्स टीमें होती हैं, सीहॉक्स फुटबॉल टीम की मिसाल वो देती हैं। ये सब माहौल ग्रिट को बढ़ाने में मदद करते हैं। सही। तो खुलासा ये है कि ग्रिट सिर्फ टैलेंट या जहानत नहीं है, ये अपने बामकसद लंबे अरसे वाले अहदाफ के साथ जज्बे और इस्तकामत के साथ जुड़े रहने का नाम है। ये गिरकर उठना है, नाकामियों से सीखना है और बोरियत, मुश्किल, मायूसी के बावजूद रोजाना कोशिश जारी रखना है। असल में यही वो चीज है जो गैर मामूली कामयाबियों की बुनियाद बनती है। आखिर में एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, अगर जीनियस होना सिर्फ पैदाइशी सलाहियत का नाम नहीं बल्कि बेहतरीन कारकर्दगी के लिए अनथक बामकसद मेहनत करना है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हम सबके अंदर एक जीनियस बनने की सलाहियत मौजूद है? बस शर्त यह है कि हम वो कीमत अदा करने को तैयार हों जो ग्रिट मांगती है। ये सोचने की बात है। सत श्री अकाल। आज ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਟ ਬਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਗਨ। ਅਸੀਂ ਐਂਜਲਾ ਡਕਵਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਥੋੜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਕੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਾ ਖੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤ? ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆਏ। ਦੇਖੋ, ਡਕਵਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾ ਇਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਨੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਟੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੁਦਰਤੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਟ ਹੈ ਕੀ ਅਸਲ 'ਚ, ਜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਜਨੂਨ ਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ। ਕੋਈ ਉਦਾਹਰਣ? ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਵੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਕੈਡਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਬਲੀਅਤ ਤਾਂ ਸੀ। ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜ਼ਿੱਦ, ਉਹ ਲਗਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਸੀ। ਦਾਖਲਾ ਸਕੋਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਿਟ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਿਰਫ ਟੈਲੈਂਟ ਜਾਂ ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੇਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਟ। ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਸਮਝਾਓਗੇ, ਮਿਹਨਤ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ। ਡਕਵਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ। ਯੋਗਤਾ ਮਤਲਬ ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੁਨਰ, ਯਾਨੀ ਸਕਿੱਲ। ਠੀਕ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੋਲ ਦੋ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁੱਗਣਾ ਯੋਗਦਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਮਹਾਰ ਵਾਰਨ ਮੈਕੈਂਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਖਕ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਿਟ, ਇਹ ਲਗਨ, ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ? ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਖੋਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਨਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਤਜਰਬੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ IQ ਸਕੋਰ ਵਧੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਲਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਟ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ?
ਡਕਵਰਥ ਨੇ 4 ਮੁੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ। ਇਹ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭ ਲਵੇ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੈਰਾਕ ਰੋਡੀ ਗੇਨਜ਼ ਸੀ, 올림픽 골ਡ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ ਵੀ ਖੇਡ ਕੇ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਈ ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਭਿਆਸ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਭਿਆਸ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗੇ, ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਘੰਟੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਤੀਜਾ ਤੱਤ, ਮਕਸਦ। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਆਸ। ਪਰ ਇਹ ਐਵੇਂ ਅੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਪੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣ, ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣ। ਬੈਲੈਂਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ, ਨਾ ਬਹੁਤੀ ਢਿੱਲ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਲੱਬ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਵੀ। ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਲਗਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਡਕਵਰਥ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਚੁਣੇਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਜਿਵੇਂ 1 ਸਾਲ ਜਾਂ 1 ਸੀਜ਼ਨ, ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮੇਟੀਏ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਟ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਨੂਨ ਤੇ ਲਗਨ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੋਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿਲਚਸਪੀ, ਅਭਿਆਸ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਸ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ? Have you ever wondered, why some people who seem just incredibly talented, maybe the early stars, they sometimes just level off? Yeah, while others, maybe they struggled a bit at first, they end up doing amazing things. It's fascinating. It really is. Okay, so let's get into this. We're doing a deep dive today into something called grit. That's the term. And grit, well, it's really about that blend. A potent mix of passion, sticking with it, and perseverance towards goals that might take a long, long time. So it's more than just being tough. Oh yeah, much more. It's knowing your direction, your long-term aim, and just, staying on that path. Right, and this isn't just like a gut feeling we have. For this deep dive, we've pulled together insights from a whole bunch of sources. Really interesting stuff. We're looking at psychology studies, real stories from cadets at West Point, spelling bee champs. Olympic swimmers, yeah. Entrepreneurs starting from nothing. Artists dedicating their lives to their craft. It's a wide range. And our goal, our mission really, is to boil down what grit actually is. Why it seems to matter, sometimes even more than raw talent. And how it develops, right? Like, can you grow it? Exactly. And maybe most importantly, give you some practical ideas, things you can actually use to maybe build a bit more grit in your own life. Okay, sounds great. Let's start with that West Point example, because figuring out potential there is, well, it's obviously crucial. Absolutely. And the sources we looked at really highlight this ongoing problem they had. Promising cadets, people who seemed like sure bets, were quitting early on. Even after getting through all the tough initial parts? Yeah, even then. Which is puzzling when you look at how they select people. They use this thing called the whole candidate score. Right, I read about that. It's not just grades, is it? No, not at all. It includes SAT or ACT scores, high school rank adjusted for how big the class was, leadership evaluations, even physical fitness tests. It's very comprehensive. Super detailed. And yet, they still couldn't reliably predict who would stick it out.
Precisely. Which strongly suggests there's something else going on, something beyond the measurable talent and achievements they were assessing. Maybe this grit factor only shows itself under pressure. It's a really interesting thought. Does it only reveal itself through, like, actually doing the hard stuff? It seems that way, and it leads us right into this idea of perseverance, which often gets maybe underestimated. Yeah? Our sources are just full of stories about successful people, top performers, and the common thread is always this ability to just keep going, especially after failures or setbacks. Like that writer you mentioned. The one who wasn't seen as particularly gifted at first. Exactly. People apparently laughed at the early stuff, thought it was clumsy. But they just kept at it, kept writing, kept refining. And eventually won a Guggenheim Fellowship. That's persistence. It really is. And it's not just about enduring either. It's also this pattern of always trying to improve. Many high achievers are described as never satisfied, always being their own harshest critic. That constant drive to get better seems key. So putting it together, this grit thing seems to have two main parts based on the sources. Yeah, I think so. First, there's that resilience, that sheer hard work, just showing up day after day. Okay. And the second part, a really clear, deep understanding of what you're actually aiming for, that direction, that purpose. Got it. So resilience plus direction, stamina, and a destination. That's a great way to put it. It's that combination that seems to set people apart. Not just determination, but determination with a clear goal. Okay, so let's look at where else this shows up. The research connects grit to education, right? Yes, definitely. The studies we looked at show a pretty clear trend. Adults who score higher on grit measures tend to go further in formal education. So people with MBAs, PhDs, MDs, JDs, they generally show more grit. On average, yes, compared to those who stopped after a 4-year college degree. But there's a twist. Oh, what's that? Well, interestingly, the sources found that people who successfully got degrees from 2-year colleges actually scored a bit higher in grit than the 4-year grads. Huh. That seems counterintuitive at first glance. Why would that be? It does seem odd, but think about community colleges. The dropout rates can be incredibly high. Sometimes, 80% don't finish. Wow, that high. Yeah. So the ones who do make it through, who persevere and get that 2-year degree, they've likely overcome significant hurdles. They've shown real grit just by sticking it out. That makes a lot of sense, actually. It fits with an anecdote from one of the sources. Someone who used to be in consulting then became a teacher. Right, that story. They saw it right there in the classroom. What did they notice? Well, some students who were clearly bright, talented, just weren't doing that well. They were underperforming. Okay. But then there were others, maybe they struggled more initially, who ended up overachieving. And how did they do it? Effort. Exactly. Yeah. They were the ones always prepared, taking tons of notes, asking questions, showing up for extra help. Their hard work just paid off. There was that specific story, too, about David, the student who struggled with calculus. Oh, yeah. Great example. He found it really tough at first. But he didn't give up. What did he do? He went to the teacher for help, kept practicing, kept working at it. By senior year, he wasn't just passing, he was in honors calculus, aced the AP exam. And went on to get dual degrees in engineering and economics from Swarthmore. That really drives home how effort can overcome initial, maybe, lack of aptitude. It absolutely does. And this leads us into that whole talent versus effort debate. Right. Society seems pretty focused on talent, doesn't it? Very much so. Our sources point out how news stories, media profiles, they always seem to emphasize the natural gift when someone succeeds. Like they were just born brilliant or athletic or whatever. Exactly. But the sources propose this really powerful idea. Effort counts twice. Effort counts twice. How does that work? Well, first, effort helps you build skill. The more you practice, the better you get, right? Okay, makes sense. But then effort comes in again to make that skill productive. You need effort to actually use the skill you've built to achieve something tangible. Ah, I see. Like learning guitar is one thing, but then practicing and writing songs and performing takes more effort on top of that. Precisely. Think of Warren McKenzie, the potter mentioned in the sources. Decades of constant focused work. That's mastery through sustained effort. Yeah, that's incredible dedication. And contrast that with Mark Spitz, the Olympic swimmer. Everyone marveled at his natural talent. Right, like he was just born to swim fast. But Nietzsche had a great point about this, highlighted in the sources. We tend to ignore the act of becoming, all the grueling practice behind the scenes. We prefer the magic of innate talent over the grind of hard work. It seems so.
Nietzsche saw great individuals more like craftsmen, meticulously learning all the parts before creating the whole thing. It kind of downplays that instant genius idea. So, okay, effort is key. It builds skill, then makes skill productive. Did the researchers try to formalize this, like create a theory? They did. There's this anecdote about a conversation with Marty Seligman, a prominent psychologist. After collecting lots of data, he pointed out they still lacked a real theory of achievement. Just data wasn't enough. They needed a framework. Right. So the theory they came up with is actually quite neat. It goes like this. Talent times effort equals skill. Okay, talent multiplied by effort gets you skill. Then skill times effort equals achievement. So effort comes in again. Exactly. Talent is how quickly you improve your rate of learning, but effort is the multiplier, first to build the skill, and then to apply that skill and actually achieve something. It really emphasizes how critical effort is twice over. Okay, so we're establishing grit. This passion and perseverance combo is super important. But measuring it, how do you quantify something like that? That was the next step. Realizing how vital grit was, the author set out to develop a way to measure it, which led to the grit scale. A questionnaire, basically. Yeah, a set of statements designed to gauge how much someone sticks with things over the long haul. Things like, I finish whatever I begin. Or, I am diligent. I have overcome setbacks to conquer an important challenge. Questions that get at that consistency and stick-to-itiveness. And people rate how much those apply to them. Right. You rate each statement, then your scores are averaged to give you an overall grit score. And you can compare that score to others. Yes, they compared it to a large sample of American adults, so you can see kind of where you stand on the grit spectrum. Interesting. Okay, so we can measure it roughly. Let's talk about some real-world examples. The sources had some good ones, right? Definitely. Jeffrey Gettleman, the New York Times journalist in East Africa. Yes, the Pulitzer winner. His work reporting for a decade in extremely dangerous, often tragic circumstances that takes immense courage, immense perseverance. That's grit in journalism right there. Absolutely. And Pete Carroll, the football coach. His whole philosophy, do things better than they have ever been done before. Even after getting fired, he talked about sticking to your personal philosophy, that internal compass that keeps you driving forward. So grit isn't just blind persistence. It's often tied to a deeper purpose or philosophy. It seems so. But the sources also talk about how a lack of grit can show up, not just quitting, but in how people structure their goals. What do you mean? Like having big dreams, those top-level goals, being a doctor, an artist, whatever, but no real plan, no smaller steps to get there. Like wanting to climb Everest, but having no idea about base camp or acclimatization, just focusing on the summit. Exactly. A goal hierarchy with only the peak. And this connects to Gabrielle Oettingen's work on positive fantasizing. Positive fantasizing. Sounds good. Well, dreaming about success feels nice, gives you a short-term boost, but her research found that if you only fantasize without thinking about the obstacles and how you'll overcome them, it can actually hurt your chances of achieving the goal long-term. Because you get the good feeling without doing the work. Pretty much. It's contrasted with someone like Sid Hoff, the cartoonist. The really prolific one. Yeah, decades of consistent output. He really lived that effort counts twice idea. And apparently even his book on cartooning didn't just cover technique, it also talked about how to handle rejection. That's crucial. Facing rejection is part of any long-term pursuit. Absolutely. Hoff's story shows that passion and perseverance often need a dose of realism about the challenges ahead. So this raises the big question. Are we born gritty or can we become gritty? The nature versus nurture debate again. Right. And the answer from the sources is, well, it's both. Like pretty much every human trait, grit seems to be shaped by our genes and our experiences. Can you give an example? Think about height. It's highly heritable, right? Okay. But average height has gone up a lot over generations. Why? Better nutrition, healthcare, environmental factors. Okay, so the environment can change a seemingly fixed trait. Exactly. Or look at the Flynn effect, the fact that IQ scores rose significantly throughout the 20th century. That wasn't genetics changing rapidly, it was environmental factors impacting cognitive abilities. And the same applies to personality traits like grit. It seems so. Personality isn't set in stone. It changes throughout our lives based on what happens to us, what we learn. The author even used their own career path changes as an example. And didn't the data show grit tends to increase with age? Yes, on average, older people tend to score higher on grit. Whether that's individual maturation or generational differences, it shows grit isn't static. It can grow. Okay, so if grit can change, why do people quit?
What makes someone give up on a goal? Well, people often say things like, I lost motivation, or I'm just not a finisher. But the sources suggest digging deeper. What are the real reasons? Often it boils down to specific thoughts. This is boring. The effort isn't worth the reward I'm seeing. This isn't actually important to me anymore. Or, crucially, I feel like I just can't do this. That feeling of helplessness. Right. But gritty people quit things too, don't they? Yes, that's a key point. Gritty individuals aren't stubborn about every single goal. They might abandon smaller projects or paths that aren't working. But not the big stuff. Exactly. They tend to be incredibly stubborn about their main top-level guiding goals, the things that really define their direction. They don't easily swap their compasses, as the source material puts it. Okay, that makes sense. Which brings us to passion. We always hear, follow your passion. Is it that simple? The sources suggest it's a bit more complicated. That advice is tricky, especially for young people, because, well, many people haven't found a passion yet. Right. You can't follow something you haven't discovered. Precisely. And looking at grit paragons, people like Rowdy Gaines, Will Shortz, Jeff Bezos, their stories often show passion developing over time. It wasn't usually some sudden lightning bolt moment. It grew through doing stuff. Whoa. Engagement. Yeah, through trying things out, experimenting, seeing what clicked. Interests often get sparked by interacting with the world. You can't really force an interest, as Bezos said. That's a mistake. And that initial spark might be small, right? Almost unnoticeable at first. Very subtle sometimes. It's not like boredom, which usually hits you over the head. So maybe we shouldn't constantly ask ourselves, is this my passion? Especially early on. Patience is needed. And those early influences matter too, like with Shortz and Bezos. Definitely. Will Shortz's mom loved words and puzzles. Jeff Bezos's mom encouraged his curiosity and these deep dives into whatever caught his interest. Those things shape you. There was also that personal story about running without tracking anything. Yeah, the author's example. Just running, but not paying attention to pace or distance, not trying to improve. It illustrates how just going through the motions without focused engagement doesn't really build skill or deepen interest. Which leads perfectly into deliberate practice. The engine of skill development, as the sources call it. And it's different from that feeling of flow. Flow, yeah. That state where things feel effortless, you're just absorbed. Right. Csikszentmihalyi's concept. Experts often experience flow, but the sources argue that flow is often the result of many, many hours of deliberate practice. So deliberate practice is the hard work before the flow. Exactly. Deliberate practice is, well, it's deliberate. It's effortful, highly focused. You set specific goals, you concentrate hard, you look for feedback, and you repeat, especially the tricky parts. Like the author getting feedback on that TED Talk. Too much jargon, not enough clear examples. Perfect example. Taking that feedback, adjusting, practicing clear communication, that's deliberate practice in action. It's not always comfortable, but is how you improve. So the key parts are specific goals, focus, feedback, and repetition. Nailed it. Even those performances that look totally effortless are built on tons of that kind of challenging practice. Okay, so we have interest, developing into passion through engagement. We have deliberate practice to build skill. What's the next piece? The third crucial component identified in the sources is purpose. Purpose, meaning contributing to something bigger. Exactly. The intention to contribute to the well-being of others, connecting your work to something beyond just yourself. And we saw examples like Antonio Galloni wanting to help people understand wine, or Katrina Trost cooking for her family. Right. Their top-level goals had that element of purpose. And interestingly, research suggests this sense of purpose is linked to greater happiness. That makes sense. The sources also mentioned the 3 bricklayers analogy. Ah, yes, a classic. 3 bricklayers are asked what they're doing. One says, I'm laying bricks. That's just a job. Okay. The second says, I'm building a church. That's more like a career, sing the bigger project. Right. The third says, I'm building the house of God. That's a calling. That reflects a deep sense of purpose and meaning in the work, and that calling orientation is strongly tied to purpose. Even in seemingly ordinary jobs like the garbage collector story. Roy Schmidt. Yeah, finding purpose and connection in work that others might overlook. So how do you get purpose? Is it another lightning bolt? Doesn't seem likely, based on the pattern so far. No, the sources suggest a progression, often in 3 phrases. Yes. It might start with that initial interest. Then, through deliberate practice, it becomes a habit. And finally, that habit can become integrated with a sense of purpose, connecting it to others. So it can evolve over time. Definitely. Like Joe Leader finding meaning in transit work, or Michael Boehm creating a meditation class for his patients.
Purpose can emerge unexpectedly. And role models are important here too. Seeing problems you want to solve. Yes, seeing others who inspire you or identifying a need in the world can really fuel that other-oriented motivation that builds purpose. Okay, interest, practice, purpose. There's one more element, right? Hope. Yes, hope. Specifically, learned optimism. This came from the author's own experience struggling in biology. Right, and getting told maybe she should just drop the course. That led her to explore Martin Seligman's work on learned helplessness versus learned optimism. What's the difference? It's about how you explain bad events. Pessimists tend to see setbacks as permanent, it'll never change, pervasive, it ruins everything, and personal, it's my fault. And optimists. Optimists tend to see setbacks as temporary. This is tough, but it won't last forever. Specific, this affects this one area, not my whole life. And often external or changeable. I can do something about this. And this matters for grit. Big time. Studies showed optimistic teachers were grittier, happier, and their students actually learned more. Wow. The author even talked about battling their own negative self-talk as a teacher, consciously working to reframe things more optimistically. The key is that this internal self-talk can be changed with practice. So hope isn't just wishful thinking. It's a way of interpreting challenges that keeps you going. Exactly. It fuels perseverance. Okay, so we've covered growing grit from the inside. Interest, practice, purpose, hope. What about the outside? How do environments shape grit? Parenting has to be a big one, right? Yeah. But there are so many different styles. Strict, permissive. The sources point towards something called wise parenting or authoritative parenting as being most effective. Wise parenting, what does that involve? It's about being both demanding and supportive, setting high expectations, but also providing lots of warmth, love, respect, and encouragement. It's about limits, but also latitude to learn and grow. So not just strict, not just lenient, but a combination. Right. And kids learn so much by watching their parents. If parents are loving, respectful, and demanding, holding themselves and their kids to high standards, that's a powerful model. We saw that with some of the grit paragons. Their parents were role models with similar interests. Yes, like Steve Young or Francesca Martinez, and this idea translates directly to teaching as well. Demanding but supportive teachers. Exactly. Ron Ferguson's research highlighted these psychologically wise teachers who push students but also make them feel capable and cared for. They foster competence, well-being, and high hopes. There was that experiment too with the feedback on student essays. David Yeager and Jeff Cohen's work, yeah. Simply adding a note saying, I'm giving you this feedback because I have high expectations and I know you can reach them, made a significant difference in student revision and performance. That's powerful. Just communicating high expectations with belief and support. It really is. And even if someone didn't have that ideal parenting, the sources note that gritty individuals often had someone, a coach, a mentor, another relative, who provided that crucial encouragement. Okay, so wise parenting, wise teaching. What about other environments, like activities outside of school? The playing fields of grit. Extracurriculars seem really important here. Why them specifically? The author mentioned that anecdote about their daughter in the raisin box, how quickly she gave up. Extracurriculars often provide a unique combination. They're challenging, requiring practice and dealing with setbacks, but they're also usually intrinsically motivating. Kids often choose to do them. Right, you practice piano or soccer because you enjoy it on some level, even when it's hard. Exactly, and that combination fosters grit. Look at Jeff Canada's Harlem Children's Zone. They invested heavily in extracurriculars, believing in their power to build character. The author's family even had a hard thing rule. Yeah, everyone had to pick something difficult that required daily, deliberate practice and stick with it for a while. A way to intentionally build that muscle. And culture matters too, right? Yeah. Like within a team. Absolutely. Anson Dorrance, the UNC soccer coach, meticulously crafted a culture around core values, emphasizing competition as striving together, with intense challenge but also deep support. And Pete Carroll did something similar with the Seahawks. Yes, focusing on building a supportive and demanding environment. It's that blend, again, high standards, coupled with genuine care and belief. Okay, so we can cultivate grit internally, and environments can support it externally. One last question people might have. Does being really gritty make you less happy? Like, are you just grinding all the time? That's a fair question, but the survey data presented in the sources actually showed the opposite. Really? Yeah. Higher grit scores were positively correlated with higher life satisfaction and more positive emotions. It seems grit and well-being can go hand in hand. That's good to hear. So maybe the purpose and passion aspects contribute to that happiness.
that seems likely. And the final thought really ties back to dealing with challenges. It's about failure. Right. Ta-Nehisi Coates quote. Failure is probably the most important factor in all of my work. It highlights that achievement isn't usually a smooth path. It involves trying, failing, learning, refining, and trying again. Persistence through setbacks is just part of the process for anything significant. So let's try to wrap this all up. Our deep dive suggests grit is this blend, this really potent mix of passion for long-term goals and the perseverance to stick with them. And often it matters more than just innate talent. The really encouraging part is that it seems grit isn't fixed. You can actually develop it. How? By finding and developing interest, putting in that focused, deliberate practice. Cultivating a sense of purpose beyond yourself and fostering hope, that optimistic way of viewing setbacks. And from the outside, supportive, demanding environments-wise, parenting, teaching, coaching, culture, they all play a huge role. Right. So hopefully this deep dive has given you, our listener, a kind of shortcut to understanding this really crucial part of achieving things and feeling fulfilled. Which leaves us with a final thought for you to chew on. Think about one area in your own life. Where could a bit more grit, a bit more of that focused persistence really make a difference? And maybe, just maybe, what's one small concrete step you could take, maybe even today, to just get started, to get on that treadmill, as the sources say, and keep going? Something to reflect on.